Computers are used a lot in education these days. What do you think about this? Yes, at the present time, the uses of computer have increased in the area of education. The lessons has become more interesting because teachers give presentations online, as there is a faculty of audio as well as video. Moreover, uh, teachers use projectors in classrooms to make lessons more remarkable. Very good. Therefore, students make more interest and learn lot of things. Very good. Students take more interest, not make. हाँ जी, take, Stu- Students take more interest in studies. ठीक है? हाँ जी, And uh, are able to access e-books and are also able to access e-books. E-books होती है ना, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं फिर. हाँ Once जी, they've Yes, become ma'am. familiar with technology, they are able to access e-books which are very helpful for them. Okay? और इसमें आपने lessons have become, not has become. Lessons बोला है तो have आएगा, ठीक है? और okay ma'am. faculty of audio as well as video नहीं, facility of audio as well as video. Teaching online through audio visual medium makes the lessons or makes the teaching learning process more interesting. The students are able to grasp the lessons easily through the various presentations given by the teachers online. Okay, इसको ऐसे बोलना. Okay, fine. Now Sonia will answer. Yes, ma'am. Computer is used a lot these days in the field of education. What do you think about this? I think it is. I think it is the need of these days. Need of the hour or need it is okay, it has become a need these days. It has a become need of the these days. Uh, Become a need. because our 60% to 70% of our education Depends on. depends on computer. Uh, teacher used for the making student results and For, make फिर से बोलो. teacher use computer for making the student Results of the students. result of the students and maintain the records and maintain the records maintain the records. Teacher give the presentation. uh, Teacher give the presentation give the presentation no, ma'am, give the presentation to the student. नहीं, give the presentation to the students and given the नहीं, give the education Make the through. teaching learning Yes, ma'am. process more easy and interesting. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, हम एजुकेशन I, फील्ड की बात कर रहे हैं, है ना? yes, तो ma'am. एक तो आपने टीचर्स का बोल दिया, ठीक है, टीचर्स का वर्क इजी हो जाता है, दे आर एबल टू प्रिपेयर द रिपोर्ट्स ऑनलाइन.
and Yes, ma'am. they can do calculations of the marks of the students very quickly. ये तो बात है ही, rather than बैठ के वो पूरा कैलकुलेट करके रिपोर्ट कार्ड बनाए, तो कंप्यूटर पे उनका वर्क जो है वो जल्दी हो जाता है, आसान हो जाता है. मोर ओवर स्टूडेंट्स के लिए भी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है बहुत, थ्रू द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल मीडियम. ओके, बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल मीडियम ही है कंप्यूटर. इसमें हम बोल भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं थ्रू प्रेजेंटेशंस, कलरफुल इमेजेस which attract the students and helps them to grasp the lessons more quickly. ठीक है, तो ये Okay, ma'am. आपका आंसर होगा. So yes, I believe that uh, the usage of computers in the field of education is a positive thing. पॉजिटिव हो गया ये. जब आपने इतना सब कुछ पॉजिटिव बोल दिया तो कंक्लूडिंग लाइन भी आप बोल सकते हो. सो यस, इट इज अ पॉजिटिव चेंज व्हिच हैज कम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. इसको इस तरह से आप कंक्लूड कर दोगे. और जो आपने फर्स्ट लाइन बोली थी जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे थे, इट हैज बिकम अ नीड ऑफ द आवर. In my country, it has become a need of the hour when the entire world has accepted the use of technology to make education more beneficial for the students. Okay, ma'am. ये जो फर्स्ट, It has become से start करना है ना मैम? yes, yes. So इसमें जैसे computer is nowadays being used in the field of education. So what do you think about it? So आप बोल सकते हो, it has become a need of the hour when the entire world, उस टाइम पे जो पूरा जो world है, it has accepted the use of technology to make education more beneficial for the students. पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया है टेक्नोलॉजी को एजुकेशन फील्ड में लाकर, फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स. तो अब तो ये नीड बन गई है. इट इज नेसेसरी टू गिव बेटर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन. Yes, ma'am. ठीक है, ये आप फर्स्ट सेंटेंस है, फिर उसके बाद जो भी आपने बोला वो आप बोल सकते हो. तो उसके बाद आप एंड में आप बोल सकते हो, यस, सो इट हैज डेफिनेटली ब्रॉट अ पॉजिटिव चेंज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और अ पॉजिटिव रिफॉर्म. पॉजिटिव चेंज हो गया, पॉजिटिव रिफॉर्म हो गया, कुछ भी बोल सकते हो आप. ओके, Okay, ma'am. ओके, यू अंडरस्टूड बेसिकली. Yes, ma'am. ओके, फाइन, नाउ मेरा विल आंसर. Computer is used being used a lot these days in the field of education. What do you think about it? Yes, I think computer are very beneficial for the Computers are, students. Computers are very beneficial for the students because nowadays, if we are considering as a pandemic situation, so more all schools are पैंडेमिक closed. सिचुएशन के आप छोड़ दो, पैंडेमिक सिचुएशंस को आप छोड़ के जनरलाइज बोलो अभी. Okay, so I believe computers gives a very big transform into the education industry because nowadays most of the school prefer to use laptop or computers to complete their chapters on the laptop, complete their chapters on the online basis. So I believe it is very important. Uh, it is very yeah. Computer. So people are mostly मैम ये भी बोलना है कि ऑनलाइन क्लासेस भी मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं. यस, दीज डेज ऑनलाइन क्लासेस आर बीइंग कंडक्टेड, और ये भी आप बोल सकते हो, और ये भी जो आप बोल सकते हो कि students are able to access more information online about various topics that they study in the school. They can Okay, get more information or detailed information about it online through the computers. students get the more information. सोनिया, आप म्यूट कर लो. Students get the more information. Get Uh, get the morning, get more. get more information. In uh, get more information into About any topic that they study. any topic at the study That they study. that the study Yes, in the school. कुछ भी in the टॉपिक वो school. स्टडी करते हैं उसके बारे में अगर उनको डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है, वो हमेशा कंप्यूटर में गूगल करके दे कैन गेट मोर जी इंफॉर्मेशन. जी
तो Yes. वो ये भी सीख गए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो कंप्यूटर्स हैव